Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear friends, as you know that we have recently started a new YouTube channel with the name The Essence of Islam. The main aim of this channel is the propagation of Islam through the literary treasure of the Ahmadiyya and Ishaq Islam, and we have already posted 6 videos which are divided into 2 series. First 5 videos are the part of the series that focuses on Ahmadiyya and Ishaq Islam Lahore. The title of that series is the clarification of misconceptions about Ahmadiyya movement. We have discussed we have given a short introduction of the Jamaat. We have discussed why it came into existence, what were the reasons for the bifurcation of the main Jamaat that was laid down by the Imam of the age, Hazrat Mirza Ghulaam Ahmed Mujadid, and we also discussed our beliefs and the 10 conditions of the pledge, discussed the differences between Ahmadiyya Anjuman Ishaq Islam Lahore and Ahmadiyya Muslim community. The Ahmadiyya Muslim community is headed by the Khalifa Mian Masroor Ahmad Saab at this time, and is headquartered in London, whereas Ahmadiyya Anjuman Ishaq Islam Lahore is headed by Amir. We have discussed all these things in the previous episodes. Now we have started a new episode, a new series in which we will focus only on Hazrat Mirza Ghulaam Ahmed Sahab of Qadian, who is the reformer and renovator of the 14th century, Mujadid of the 14th century, and we will try to focus on each and every aspect of his life, every claim he made, like the claim of promised Masih, the claim of Imam Mahdi, and the claim of Mujaddidiyat. But all these episodes were broadcasted in Urdu language, and after that some of our viewers from foreign countries who cannot understand Urdu, they just requested us to please broadcast these programs in English or use subtitles. I don't know how to use subtitles, that's why I am recording this message in English as well as in Urdu. We will try to manage both the languages with. I'm not a scholar, and whatever I speak according to my understanding of Islam and Ahmadiyyat. And I just want to add a disclaimer, as this is our first episode in English. I have already added that disclaimer in my Urdu episodes, that whatever I speak, I'm not a representative of the Jamaat. I'm not the spokesperson of the Jamaat. Whatever I will speak on my behalf, and I will be answerable for each and everything which I explain in these videos. So as we have already just discussed a brief life story of Hazrat Mirza Ghulaam Ahmed Qadiani in the first episode, and now the topic for today is was Hazrat Mirza Ghulaam Ahmed Sahab of Qadian, the Mujaddid, the renovator, or reformer of the 14th century. Let's discuss that topic, and this is a very vast topic, and we cannot conclude this topic within one episode. So what we will do, we will divide this topic into 3 episodes so that we can explain it in a better way, and moreover we have to translate this video into English, into Urdu also, for our non-English speaking viewers. That's why the video will become very large, and we have a very slow internet connection here, and we cannot upload it if the file is very large. So let's begin with the topic. Thank you very much. Was Hazrat Mirza Ghulaam Ahmed Sahab of Qadian the Mujadid, the renovator or reformer of the 14th century? This is the topic for this episode. The first question is, what is Mujadid, renovator or reformer? As it is accepted by Muslims that prophethood has come to an end with the advent of Holy Prophet Muhammad, may peace and blessings of Allah be upon him, it is also agreed that Mujaddids will be raised after him from time to time for the reformation and regeneration of the Muslim nation. Abu Dawood, regarded to be the most authentic work of tradition from among the Siyasata after Bukhari and Muslim, mentions the following reports from the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him. Most surely Allah will raise from this ummah at the commencement of every century one who will bring about the revival of their religion. Such a person is known as Mujaddid. Now, what is Tajdeed? Tajdeed signifies the purging Islam of all the alien conceptions that have entered into it with the passage of time.
and resetting the picture of Islam in its original splendor. Time affects everything. It does not spare even religion. Interested persons do associate such practices and doctrines with religion as a detrimental to its cause. Islam had suffered same fate. The task of the Mujaddid under these circumstances is to revive and reveal the real beauty of the face of Islam to the world. Now the question is Mujaddid appointed by God? It must be borne in mind that the term God will raise or appoint has occurred in tradition for the advent of a Mujaddid. And appointment of anybody from human being signifies only his appointment from the God. The same term has been used in the Holy Quran for appointing of the messengers. This means that the appointment of the Mujaddids indicate the raising of a particular person who has been bestowed with the gift of divine revelation and communication for a special purpose. Ulama and leaders, no doubt, have always been present among the Muslims, and they too serve Islam in their own way. But a Mujaddid is a servant of Islam with whom Almighty God communicates and whom He appoints for a specific purpose, that is, for the eradication of errors in religion that have weakened and distorted the original form of Islam. Such Mujaddids have been appearing at the head of every century. Now let us discuss authenticity of this hadith of Mujaddid. Imam Suyuti writes in Mirqatul Saud that all the preservers of the hadith agree on the authenticity of this tradition, and forerunners like Hakim and their successors like Abdul Fazl Iraqi and Ibn Hajjar all approve its genuineness. Ibn Asakir too, after accepting the truth of this tradition, writes that this proves the coming of Mujaddid at the beginning of every century. Shah Waliullah of Delhi, in his book Izalat-e Khifa and Tafhimat-e Ilahiyya, also admits the authenticity of this report. Another argument for its genuineness is that other authentic traditions collaborate with it. In fact, the basis of this tradition lies in the Holy Quran. The fundamental principle is that in spite of bringing prophethood to an end, God will continue to communicate with the sages of this ummah for the eradication of errors that may find place in Islam from time to time. He would himself guide this nation by raising Mujaddids at different intervals. Free communication of God with non-prophets has been mentioned in the Holy Quran. The mother of Moses, for instance, was not a prophetess, but the Holy Quran clearly says, and we revealed to the mother of Moses. At another place, we observe in Holy Quran, when we revealed to your mother what was revealed. In both these verses, Moses' mother has been referred to as the divine recipient, the recipient of the divine revelation, and this revelation was positive to such an extent that she put her son Moses in the river without any fear. Mother of Jesus was also spoken to by angels, and she too was not a prophetess. Companions of the Jesus were also not prophets, but the Holy Quran says, and when I revealed to the disciple. And about the saints of the Ummah, we find in the Holy Quran, angels descend upon them. And again, we can see that they shall have good news in this worldly life. And this good news is called Mubashirat. These Mubashirat, in authentic traditions of the Holy Prophet, have been called a part of prophethood. Nothing is left of prophethood except Mubashirat. Moreover, in reports that have been agreed upon by all, it has been mentioned that as God spoke with non-prophets from among the other nations, so shall He address to the persons of this Ummah, like Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu the Great, who was one of them, as reported by Bukhari. Thus, if divine communication is dispensable to a Mujaddid, both the Quran and the genuine tradition confirms that God shall always communicate with such persons in this nation.
I think this is enough for the day because we otherwise the video will be very the video file will be very large and it's impossible to upload with this slow internet connection. Tomorrow we will discuss. Today we have discussed the definition of Mujadid as per the traditions of Hazrat Muhammad Mustafa Ahmed Mujadid sallallahu alaihi wasallam, and now we discussed about that the Mujadid is appointed by God himself, and we talked about the authenticity of the hadith of the Mujaddid, which we mentioned in the beginning of this topic. Tomorrow we will talk about the claims of other Mujaddids. There are many Mujaddids who made such claims, so we will talk about that in the later episodes. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों बुजुर्गों, जैसा कि आप जानते हो कि ये हमारी दूसरी सीरीज का दूसरा एपिसोड है, जिसमें हमने इसकी पहले एपिसोड में हमने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर रोशनी डाली, एक ब्रीफ जो है उनका डिस्क्रिप्शन दिया लाइफ का, उनकी अर्ली लाइफ वगैरह के बारे में और किस तरह उन्होंने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया। तो इसका जो मैंने अभी अंग्रेजी में जो बात की है इसी का मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि ट्रांसलेशन की जरूरत तो नहीं है। माशाल्लाह सभी लोग अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा उन लोगों के लिए जो शायद थोड़ा ना समझ पाए या उनके लिए इसमें बस इसी जो है मैंने अभी बात की इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमने बात की हदीस मुजद्दिद पर और उसको हमने उसकी ऑथेंटिसिटी पर कि वो कितनी सही है, और हमने बात की वही विलायत पर जो गैर नबियों पर अल्लाह तबारक व तआला उनसे कलाम करता है। तो इन चीज़ों पर हमने बात की। इस सिलसिले में हम जानते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद जो है वही का सिलसिला, वही नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सिलसिला मुजद्दिदियत शुरू किया, जो इस गुलशन की, इस दीन की जो है आबियारी करता है, और इसमें से जो बिदात, जो कांटे, झाड़ियां, जो गंदगी, जो धूल, इसमें जो एक सदी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बाग की आबियारी के लिए एक माली की जरूरत होती है जो उसको उसमें काट छाट करता है। झाड़ियां जो है, जो कांटे लगते हैं, झाड़ियां लगती हैं, उसको जो है मेंटेन करने का काम जो होता है वो मुजद्दिद का होता है। तो अब उलमा का एक अपना जो है मुकाम है, हम उलमा के मुकाम को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन उनका काम जो होता है वो दीन की खिदमत अपने रंग में करते हैं, लेकिन जो ये तजदीद का काम है, ये तजदीद के काम की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुजद्दिदीन पर ही रखी है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं। वो जिस तरह से दीन को समझ सकते हैं वैसे आम उलमा नहीं समझते। आम उलमा तो वही चीज समझ सकते हैं जो उनके सामने है, वो खुद समझेंगे और उनको समझाएंगे, लेकिन मुजद्दिद जो है वो डायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला से जो है उन चीजों का इल्म पाता है और फिर दुनिया के सामने इस्लाम की वही तस्वीर रखता है जो रसूलुल्लाह के वक्त पर। वो कोई अपनी नई बात नहीं बताता, बल्कि इस्लाम को बिल्कुल प्योर करता है, साफ करता है। झाड़ियां, जो गंदगी, जो बिदात जो है दीन में आती हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि वक्त तो एक ऐसी चीज है कि इसका असर हर किसी चीज पर होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर आप एक कमरे में को हम 100 साल के लिए बंद रखेंगे तो 100 साल के बाद खोलेंगे तो उसकी क्या हालत होगी, चारों तरफ से धूल पर कोई चीज पहचानी नहीं जाएगी। तो फिर उसको साफ करने का काम जो है वो तजदीद होता है, और जो उस सफाई का काम करता है, और अल्लाह तबारक व तआला खुद उसको बताता है कि किस चीज को किस तरीके से रखा जाए। तो जो उसकी असली पोजीशन है और वो काम करने वाला इंसान जो है मुजद्दिद होता है, और ये मुजद्दिद इस दुनिया को इस्लाम की सही तस्वीर दिखाता है, असली तस्वीर जो रसूलुल्लाह के जमाने में थी। तो यही हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, और इसके बाद हमने ये भी जांचने की कोशिश की कि क्या मुजद्दिद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता है, क्योंकि मुजद्दिदीन भी अल्लाह तबारक व तआला, जब भी हदीस में मुजद्दिदीन का जिक्र है तो उनके लिए यही आया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल होते हैं। इसी तरीके से नबी, जिस तरह नबियों के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं गए हैं, उसी तरीके के लफ्ज़ जो है मुजद्दिदीन के लिए भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो इससे साबित होता है कि मुजद्दिदीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। तीसरी चीज जो है कि ऑथेंटिसिटी क्या है, ये हदीस कितनी सही है, इस पर हमने थोड़ा डिस्कशन किया। बुजुर्गान दीन जो हदीस के माहिर स्कॉलर्स रहे हैं उनकी जो शहादतें हमने बयान की, जैसे कि इमाम सयूती साहब लिखते हैं कि ये हदीस बिल्कुल सही है, और हाकिम हैं उन्होंने भी यही लिखा है कि ये सही है। शाह वलीउल्लाह साहब ने अपनी किताबों में इसी चीज का जो है जिक्र किया है कि ये हदीसें बिल्कुल सही है, और इनसे साबित होता है कि हर सदी के स्तर पर एक जो है मुजद्दिद आता है। और कुरान जो बाकी अहादीस से भी जो इससे कोलैबोरेट करती हैं अहादीस, तमाम हदीसों से यही साबित होता है कि मुजद्दिदीन का जो सिलसिला है वो जो है जारी व सारी है। और
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کا سلسلہ بند کر دیا تو کوئی نہ کوئی تو راستہ اس نے رکھا ہوگا اس کام کو کرنے کے لیے، تو وہ راستہ مجددیت ہے اور کوئی بات نہیں. اور ساتھ میں جو ہے یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا جو بات ہے، کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان، ایک عام انسان، نبی کے علاوہ کوئی عام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں ہم نے قرآن سے شہادتیں دی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بار کلام کیا، اور وہی اتنی مضبوط تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی ماں نے جو ہے بغیر کسی ڈر کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں پھینکا. اتنا ایمان تھا اسے اس وحی پر، تو اتنی اسٹرانگ وحی تھی وہ. اسی طریقے سے حضرت مریم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام ایک فرشتے کے ذریعے اللہ نے کلام کیا. تو ظاہر ہے نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی نہ تو وہ نبی تھی، نہ ہی حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں ان لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا. قرآن میں کہتا ہے کہ جب ہم نے ان پر وحی نازل کی. اسی طریقے سے جو ہے علماء اسلام جو ہے ہمارے اس امت کے جو بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، مجددین گزرے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ان کو اس زندگی میں ایک جو ہے اچھی خبر، خوشخبری ملے گی. تو وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ وہ اصل میں مبشرات ہیں. مبشرات کی بات ہم نے کی کہ مبشرات کیا ہوتی ہیں. مبشرات کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ مبشرات جو ہے یہ نبوت کا ایک جز ہے، ایک معمولی سا جز، کیونکہ نبوت تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور اب اگر کچھ بچا ہے اس میں سے تو بس یہی مبشرات ہے. کسی کو خواب آیا، کسی کو وہی ولایت ہوئی، کسی کو الہام ہوا. تو یہ جو ہے اس بارے میں ہم نے آج اپنے انگریزی والے ٹاپک میں ڈسکس کیا. اور کل کے لیے ہم جو ہے بات کریں گے. تو اس میں یہی ہم نے بات کی کہ اگر جو ہے بنی اسرائیل پر جو ہے غیر نبی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا تھا، تو امت محمدیہ پر کیوں نہیں ہوگا؟ امت محمدیہ تو اتنے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار ہے، تو ان کی امت پر یہ سلسلہ کیوں بند ہو جائے گا؟ تو یہی چیز ہم نے ثابت کی. مگر یہ جو وحی ہوتی ہے، یہ جو الہام خدا کرتا ہے، یہ جو ہم کلام ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یہ وہ نہیں ہے جو جبریل علیہ السلام جو شریعت لے کر آتا تھا. یہ وہی ولایت ہے جو اپنے ولیوں کے ساتھ وہ جس طریقے سے وہ بات کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو اسلام کے راز ہیں جو وہ ان کو سمجھاتا ہے اپنے طریقے سے. تو یہی وہی ولایت ہے. اور یہ آج کے لیے ہم نے اتنا ہی رکھا ہے، کیونکہ ہمیں یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے یہ ویڈیو بہت بڑی بنے گی. اس لیے ہم اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہی ڈیوائڈ کریں گے. کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے کون کون سے لوگ تھے، کون کون سے بزرگ تھے جنہوں نے جو ہے یہ مجددیت کے دعوے کیے، اور ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور آگے پھر اور چیزوں کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے جو ہے توفیق دی. تو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.